Hello friends, welcome to 5 Minutes Absolute Recipe. Today I'm going to share a very healthy and tasty recipe. It can be served as breakfast, brunch, lunch or dinner. It's super healthy, easy to prepare and has become my family's favorite dish. Here I'm using Quaker Oats that comes with 2 flavor mix, one homestyle masala and the other one tangy tomato. We all know what are the health benefits of eating oats. So let's get started. चलिए अब देख लेते हैं हमें इन रेसिपीज़ के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है क्वेकर ओट्स, कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, यहाँ पे मैंने लिया है बीन्स, कैरेट एंड कैप्सिकम, ड्राई फ्रूट, आई हैव टेकन आमंड्स, curry leaves, fresh coriander, boiled peas and corn, some water and olive oil. तो चलिए बनाते हैं द फर्स्ट रेसिपी टैंगी टोमेटो ओट्स। यहाँ पे मैंने ओट्स में 1 ग्लास वाटर ऐड कर दिया है। अभी हम इसको माइक्रोवेव में कुक कर लेते हैं फॉर अबाउट 2 to 230 मिनट्स और हमें इसको बीच बीच में स्टर करना पड़ेगा। Now it's done. At this stage, we can balance the consistency by adding a little bit of hot water. यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टैंगी टोमेटो फ्लेवर मिक्स और इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। Now I'm adding all the veggies, boiled peas and corn. Boiled beans, the capsicum and carrot. You can use any of your favorite vegetables and mix it well. So our healthy and tasty oats is ready. Now before serving, हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर एंड नट्स। हियर आई एम यूजिंग आमंड, यू कैन यूज पीनट, you can use cashew nut. So our tangy tomato oats is ready. This is my son's favorite recipe. And the next recipe is home style masala oats. This is a different recipe and the cooking style is also different. यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लिया है, अबाउट 1 टीस्पून, देन करी लीव्स एंड देन वी विल बी एडिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपने सारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, बीन्स, कैरेट, यू कैन यूज ब्रोकली, व्हाटएवर यू लाइक। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द मैजिक, the home style masala flavor mix. Now we will add oats. यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप क्वेकर ओट्स। अभी 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसे कुक कर लेंगे और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। Now our home style masala oats is ready. So let's start the plating. So ये 2 रेसिपीज़ बहुत ही इंस्टेंटली बन जाते हैं, हेल्दी तो है ही, यमी एंड टेस्टी भी। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपीज़ कैसे लगे। Thanks for watching my videos.
Stay healthy, stay fit, and stay blessed.